Now we are going to discuss candles notation. Candles notation. हम यहाँ पर क्वीन मॉडल डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में, MM1 मॉडल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वीन मॉडल्स को समझने के लिए आपको पहले कैंडल्स नोटेशन समझनी होगी। A, B, C, D, E, F। ये मॉडल की रिप्रेजेंटेशन इस टाइप की होंगी सारे मॉडल्स की। A, B, C के प्लेस पर कुछ होगा, D, E, F के प्लेस पर कुछ होगा, बट आपको ऐसे ही दिखेगा A, B, C, D, E, F, वेयर A रिप्रेजेंट्स अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन। अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका पॉइजन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। ये क्या हो जाएगा आपका इंटर अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, A represents arrival distribution. B represents here service time distribution. Service time distribution. In your MM1 model, service time distribution is exponential. Arrival distribution is a Poisson distribution. Okay. C equals to number of servers in the system. Number of servers in the system means number of channels, number of service stations, number of channels in the system. D is capacity of the system. Capacity of the system means maximum number allowed in the system. E is Q discipline. Q discipline. A represents arrival distribution, B represents service time distribution, C represents the number of servers in the system, D represents capacity of the system, E represents Q discipline. Suppose number of servers in the system, suppose हमारे पास 2 सर्वर हैं, तो इस C के प्लेस पर आ जाएगा 2। अगर सिस्टम की कैपेसिटी है 10 कस्टमर की, तो D के प्लेस पर आ जाएगा 10, मीन्स कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर हम जनरल नोटेशन यूज करेंगे कैपिटल N इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम में भी सिस्टम की कैपेसिटी इनफाइनाइट हो, तो D के प्लेस पर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। क्यू डिसिप्लिन, हमने कितने क्यू डिसिप्लिन पढ़े थे? 4। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम फर्स्ट सर्व एंड ऑल, सर्विस एंड रैंडम ऑर्डर, प्रायोरिटी बेसिस। तो यहाँ पर क्यू डिसिप्लिन, सपोज ई है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, तो ई के प्लेस पर लिख कर आ जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। अगर आपका क्यू डिसिप्लिन है लास्ट कम फर्स्ट सर्विस, तो यहाँ पर ई के प्लेस पर आ जाएगा LIS, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। ठीक है, तो ये मैं यही बता रही हूँ जो कैंडल्स नोटेशन है, ABCD के प्लेस पर डिफरेंट यहाँ पर वेरिएबल यूज होंगे। ओके, दिस इज द कैंडल नोटेशन। नाउ classification of Queen models. Classification of Queen models. Queen models are classified as, suppose पहले मैं बता रही हूँ आपको सिंगल सर्वर क्वीन मॉडल्स। सिंगल सर्वर क्वीन मॉडल्स, इसमें मॉडल 1 सिंगल सर्वर, तो अर्लांग ले लेते हैं, अर्लांग मॉडल कैसे होगा? MM1 infinity first come first service. This is exponential service unlimited queue. देखो सिंगल सर्वर है, तो इस C के प्लेस पर क्या आ गया? यहाँ पर C रिप्रेजेंट क्या कर रहा था? नंबर ऑफ सर्वर इन द सिस्टम। सिंगल सर्वर है तो C के प्लेस पर आ गया 1। M is arrival distribution, M is service time distribution,
देखो डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे डी के प्लेस पे क्या है, इन्फिनिटी, तो दैट मीन्स सिस्टम की कैपेसिटी इनफाइनाइट है, सिस्टम में कितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं। यहाँ पर ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, क्यू डिसिप्लिन। कौन सा डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, तो ई के प्लेस पर क्या गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सर्विस, अनलिमिटेड क्यू। मॉडल 2 जनरल अलार्म मॉडल, M1 सिस्टम की कैपेसिटी इनफाइनाइट है, बट क्यू डिसिप्लिन क्या फॉलो हो रहा है, सिस्टम इन रैंडम ऑर्डर। ओके, मॉडल 3 M1 N फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। अब इसमें क्या है, सिंगल सर्वर है तो सी के प्लेस पर 1 आ गया, डी के प्लेस पर उन्होंने कैपिटल एन यूज़ किया है, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट कैपेसिटी नहीं है, इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पर कैपिटल एन है, मीन्स फाइनाइट क्यू, मतलब यहाँ पे फाइन इन लिमिटेड क्यू जनरेट होगी, तो एन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, दैट इज लिमिटेड क्यू। ये हो गया सिंगल सर्वर क्यूइंग सिस्टम। और क्या पढ़ सकते हैं आप, और क्या है आपके पास, मल्टी सर्वर क्यूइंग मॉडल्स। मल्टी सर्वर मतलब यहाँ पे 1 नहीं आएगा क्योंकि सिंगल सर्वर था, तो यहाँ पर 1 आ गया सी के प्लेस पे। मल्टी सर्वर है मॉडल 1, MS इन्फिनिटी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। क्या है यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल सर्विस है, अनलिमिटेड क्यू है क्योंकि इनफाइनाइट कैपेसिटी, अनलिमिटेड क्यू है, नंबर ऑफ सर्विस स्टेशन इज कैपिटल S, पैरेलल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। ओके, सी के प्लेस पर यहाँ कैपिटल S है, मीन्स नंबर ऑफ सर्वर्स इन द सिस्टम कितने हैं, कैपिटल S। दिस इज मॉडल 3, मॉडल दिस इज 4, मॉडल 5 MS कैपिटल N फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। फाइनाइट क्यू है, बस इसमें ये डिफरेंस है ना। और कौन से मॉडल है, मशीन रिपेयरिंग मॉडल है आपके पास, थर्ड वन इज मशीन रिपेयरिंग मॉडल, MMR K greater than R. Okay, that is a Poisson rivals, exponential service time, R is repairman, K means yeah machines in the system, and general queue discipline, GD is general queue discipline. Okay, power supply model, power supply models. Fifth is economic cost profit models. Sixth is mixed queuing model, MD1, infinite first come first service, where D stands for deterministic service time. D stands for deterministic service time. Service time. Okay, these are some basic. These are some basic queuing models, classification of queuing models. Okay. Now I'm going to discuss MM1 model. First model is MM1 ये ब्लैंक है, MM1 मॉडल जनरल पढ़ा रही हूँ अभी।
ये छोड़ दीजिए. The MM1 queuing system is described as a queuing model where arrivals are a Poisson process. Interarrival time is exponentially distributed. Okay. Now service time is exponentially distributed. Okay. देखो यहाँ से अराइवल पॉइजन प्रोसेस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. 1 का मतलब क्या है? सिंगल सर्वर. यहाँ पर ABCDE होता है ना, तो C रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सर्वर इन द सिस्टम. तो यहाँ पे क्या है? 1. देयर इज 1 सर्वर. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MM1 मॉडल. नेक्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ द क्यू. यहाँ पर मैं इन्फिनिटी अगर लूँ, इन्फिनिटी लिया है तो कितना है लेंथ ऑफ द क्यू? फाइंड द लेंथ ऑफ द क्यू in which arriving users wait being served is infinite. Okay. Next क्या होगा? The population of users available to join the system is infinite. The population of users available to join the system is infinite. क्या पता है ना आपको what is lambda, what is mu? Notations में पढ़ाया था. This is lambda, means arrival rate of the customer. Mu means service rate of the customer. Lambda is arrival rate, mu is service rate. Okay. Steady state distribution does not depend on time. Yeah. Now we have measures of model. Measures of MM1 model. Okay. First, average number of customer in the system. Average number of customers in the system. Average number of customers in the system means length of the system. क्या बताई थी? LS is rho upon 1 minus rho, where rho is lambda. क्या हो जाएगा यहाँ से? आप रो के प्लेस पे लैम्डा अपॉन म्यू रखेंगे तो ये मिलेगा आपको लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा. लेस क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेंथ ऑफ द सिस्टम. लेंथ ऑफ द सिस्टम मीन्स नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू प्लस नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व्ड. नेक्स्ट वन इज एवरेज नंबर ऑफ customers in the queue. This is LQ. LQ is rho into LS. This is lambda square upon mu lambda minus mu. रो के प्लेस पे लैम्डा अपॉन म्यू रखिएगा, LS के प्लेस पे सेम वैल्यू रख दीजिएगा, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा. थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम. WS is LS upon lambda.
or you can say that 1 upon mu minus lambda. Fourth one is expected waiting time in the queue, that is WQ. This is LQ upon lambda. This is lambda upon mu minus lambda. Okay. Next one is probability that the arrival has to wait more than t time in the system. Probability that the arrival has to wait more than t time in system. क्या कितना होगा ये e to the power minus t upon ws. This is suffix ws. ws is expected waiting time in the system. Same probability that the arrival has to wait more than t time in the queue. ये हो जाएगा rho into e to the power minus t upon wq. This is wq. wq is expected waiting time in the queue. Okay. Seventh, Pn is 1 minus rho into rho to the power n, where rho should be less than 1. What is Pn? Pn represents the probability mass function of a discrete random variable denoting the number of customers in the system in a long run. Lambda is less than 1, where? Okay. Eighth. In this model, we have a infinite capacity of the system. Infinity. अगर यहाँ पर आपके पास n, कैपिटल N, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम लिमिटेड टू n, कैपिटल N आ जाए अगर आपके पास. ओके. अगर ये हो जाए m1 कैपिटल N, ये हो जाए, इसके लिए आपके पास Pn होगा 1 minus rho upon 1 minus rho to the power n plus 1, rho to the power n less than equals to n and rho does not equals to 1. और ये हो जाएगा 1 upon n plus 1 if rho equals to 1. अगर आपके पास कैपिटल N नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, अगर ये आपके पास है तो कैपिटल N, ठीक है. These are some measures of the model. Okay. Now I'm going to discuss some questions on queuing theory. As this is our first question. The number of customers arriving at a railway reservation counter is Poisson distributed with the arrival rate of 8 customers per hour. The reservation clerk is at this counter takes 6 minutes per customer on an average with an exponentially distributed service time. The average number of customer in queue will be. Okay. देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. सॉल्यूशन. यहाँ पर आपको गिवन है द नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग एट अ रेलवे रिजर्वेशन काउंटर इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड विद द अराइवल रेट ऑफ 8 कस्टमर्स पर आवर. किस रेट से आ रहे हैं आपके कस्टमर? अराइवल रेट कितनी है? 8 कस्टमर पर आवर. तो यहाँ पर अराइवल रेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से. लैम्डा इक्वल्स टू 8 पर आवर, ये होगी आपकी अराइवल रेट. ओके. द रिजर्वेशन क्लर्क इज एट दिस काउंटर. देखो आपको ये नहीं पता कौन से मॉडल का क्वेश्चन है, आपको ये चेक करना है कि इस पर सिंगल सर्वर है या मल्टीपल सर्वर है. उसने कहा है रिजर्वेशन क्लर्क, एक क्लर्क है जो सर्विस दे रहा है. दैट मीन्स दिस इज द क्वेश्चन ऑफ MM1 मॉडल. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज MM1 मॉडल फॉर्मूलाज. लैम्डा इज 8 पर आवर. ओके. आपको यहाँ पर सर्विस किस रेट से मिल रही है? इज एट दिस काउंटर टेक 6 मिनट्स पर कस्टमर. मीन्स जो सर्विस रेट है वो एक कस्टमर को सर्व करता है इन
6 मिनट। कितने मिनट में? 6 मिनट में एक कस्टमर को सर्व कर रहा है। पर आवर लैम्डा है, मतलब आपकी क्या होगी, अराइवल रेट और सर्विस रेट की जो यूनिट होगी वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि आपको ट्रैफिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर या तो मिनट में कर लीजिए या आवर्स में कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक कस्टमर 6 मिनट में सर्व कर रहा है, तो 1 घंटे में कितने करेगा, और यू कैन राइट इट एज 6 मिनट 1 कस्टमर, 1 मिनट 1/6 कस्टमर, एंड 60 मिनट, क्योंकि हमें आर में चाहिए तो कितने हो जाएंगे, 10 कस्टमर्स। म्यू इक्वल्स टू 10 पर आवर। ओके, अब आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू विल बी। क्या पूछा है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू लेंथ पूछी है। दैट मीन्स क्या पूछा है आपसे, एल क्यू क्या होगा इस केस में, ये पूछा है आपसे। व्हाट इज एल क्यू इज लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, और यू कैन राइट इट एज, और यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम रो इनटू एल एस का फॉर्मूला रख लीजिएगा, रो मीन्स लैम्डा अपॉन म्यू, आपको ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं रो। व्हाट इज रो, लैम्डा अपॉन म्यू, कितना आएगा, 8/10, दिस इज 0.8। ओके, फॉर्मूला पुट करेंगे। व्हाट इज एल इज लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, दिस इज 8/2, दिस इज 4। एल क्यू आ जाएगा आपके पास रो इंटू एल एस, 0.8 इंटू 4, दिस इज 3.2। इन आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, 3, 3.2, 4 and 2, आंसर इज 3.2। ओके, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आप डायरेक्ट लैम्डा म्यू की वैल्यू पुट करके यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं, या आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन,